Assalamu alaikum everyone. Welcome to another round of our exciting workshop on freelancing, in which we have partnered with Cedar College. This workshop is brought to you all by Circle Women Pakistan, whose mission is to advance women's economic participation and empowerment through innovative entrepreneurship, advocacy campaigns, and research. We develop and support the entrepreneurial and leadership capacity of women and youth in Pakistan to bring about economic growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Karo, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is very critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are supported by Friedrich Naumann Foundation for Freedom, FNFF, which aims to contribute to the enhancement of soft skills in the fields of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's session on freelancing will be conducted by a very talented trainer, Mr. Farhan Aqeel, who has been working as a freelancer since 2012 on several freelancing platforms. He has worked with many international clients, including Freelancer.com, managers, and also has been working as a full-time freelance game developer for the past 3 years. He's also running on a YouTube series to teach how someone can start working as a freelancer. Let me welcome our prestigious trainer today, who is here with us, Mr. Farhan. Hi, Farhan. Okay, Assalamu alaikum everyone. My name is Farhan Aqeel, and before we start the session, I would just like to know that how many of you actually know what is freelancing, or do you guys know any idea? Okay, so okay, working or providing freelance as a home-based job. Don't know, but earn terms under any organization, and anything else from anyone else? Short-term work, okay. Okay, so अभी तक के हम लोगों को जितने भी समझ आई है, मतलब मुझे जो रिस्पॉन्सेज देख के समझ आया, फ्रीलांसिंग आप लोगों के जहन में ये है कि या तो एक शॉर्ट टर्म वर्क है, आपकी अपनी टर्म्स के अंदर है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, और सेल्फ एम्प्लॉयड ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लोज इनफ है, मतलब काफ़ी क्लोज नहीं है लेकिन क्लोज इनफ है। अब फ्रीलांसिंग एक्चुअल में कोई भी ऐसी स्किल है जो कि आप सेल कर सकते हो, ठीक है, आप एक्चुअल में अपनी स्किल सेल कर रहे हो किसी भी क्लाइंट को। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाली बात वो बाद में आ जाती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम ना करने वाली बात वो भी बाद में आ जाती है, और ये कि और क्या था यहाँ पे, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, हाँ सेल्फ एम्प्लॉयड ही होते हैं। अब उससे पहले ना हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि फ्रीलांसिंग एक्चुअल में होती क्या है। आप यहाँ पे सिर्फ स्किल सेल कर रहे हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। हमारे पास लोकली जो प्लम्बर्स हैं या इलेक्ट्रिशियंस हैं या कोई भी ऐसा बंदा, मजदूर है, घर का जो मजदूर है, आप अगर घर की अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन करवाई हो तो उनको आइडिया होगा कि आप जो है, जो मिस्त्री है या जो भी मजदूर है, आप उसको पैसे देते हो, वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, आप उसको पे करते हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं। तो फ्रीलांसिंग इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आपकी अपनी जो स्किल्स हैं आप उनको किसी क्लाइंट को सेल करते हो। वो कोई बंदा भी हो सकता है और वो कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो अंडर वाली बात है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको टेक्निकल स्किल्स का आइडिया है, और जिन लोगों को टेक्निकल स्किल्स का आइडिया है वो ज़रा अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको ज़रा मेंशन करें।
ताकि ड्यूरिंग दिस सेशन जितनी भी एग्जाम्पल्स होंगी वो आप लोगों की अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनके हिसाब से होंगी। और जो लोग एक्चुअल में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर रहे हैं। ओके, कंटेंट राइटिंग, ठीक है। कंटेंट राइटिंग से हट के कोई? आई नो अबाउट फाइवर, डिजिटल आर्ट, फ्रीलांसर। हम लोग फ्रीलांस मार्केट के अंदर, मुझे कुछ रिस्पॉन्स हैं उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। फ्रीलांस के अंदर आपको ओके, कैन यू गाइस हियर मी प्रॉपर्ली? ओके, तो फ्रीलांस के अंदर आपसे वो वाली स्किल सेल करते हो जो कि आप या तो सिस्टम या लैपटॉप से परफॉर्म करते हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है, जैसे घर बनाने की अगर कोई स्किल है तो ओके, वॉइस इज कटिंग ऑफ अ लिटिल। ओके, लेट मी जस्ट चेंज माय नेटवर्क। तो फ्रीलांसिंग के अंदर आप कोई ऐसी ही स्किल सेल करते हो जो कि आप या तो सिस्टम या फिर लैपटॉप से परफॉर्म करते हो। तो अगर आपके पास कोई और सी स्किल है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा हैंडीक्राफ्ट अगर जो है ना उसको अच्छे बनाने आते हैं या DIY प्रोडक्ट्स हैं, तो आप वो ऑनलाइन सेल कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट, लेकिन आप उसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फिजिकल है। अब जब हम लोग बात करते हैं उसके डिजाइन की, तो आप वो सेल कर सकते हो जो कि एक सपोर्टिव स्किल है DIY प्रोडक्ट्स के अंदर या डिजाइनिंग के अंदर या दूसरी स्किल के अंदर। तो अब जब हम लोग फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ हैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स, और हम लोग आज लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगा कि आज का एजेंडा एक्चुअल में है क्या। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड okay, so are you guys able to see my screen? Okay, let me just open this chat box. We can say Okay, it. so there is one question इसके अंदर, I want to start from a dessert, artwork, graph drafting। ये हम लोग जो क्वेश्चन है ये वाला, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लें कि इनमें से कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन सेल भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। अब आज के जो सेशन का फ्लो है, उस सेशन के फ्लो के अंदर हम लोगों ने टेक्निकल स्किल्स देखनी है कि आप लोगों की कुछ भी स्किल्स हैं उसमें से टेक्निकल स्किल्स कौन सी है जो कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा सकते हो, ठीक है, इसको सेल करने के लिए। फिर उसके बाद आती है कि कौन कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। कुछ लोगों को आइडिया है जिसके अंदर फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिगिनर्स के लिए कौन सा सूटेबल है। यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, अपवर्क जिनको आइडिया है उसका जो है आइडिया होगा कि अपवर्क के ऊपर कुछ इश्यूज हैं, तो हम लोग ये भी देखेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है। फिर उसके बाद हम लोग फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के वर्क फ्लोज देखेंगे कि अगर फाइवर की बात करते हैं तो फाइवर के ऊपर क्या होता है, मतलब किस तरीके से होता है, उसका वर्क फ्लो क्या है। उसके बाद अगर अपवर्क की बात करें तो अपवर्क के ऊपर काम किस तरीके का होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारी जो स्किल्स हैं या हमारी जो प्रोफाइल है जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपनी स्किल्स, हम लोग वो किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे फाइवर वालों को सबसे ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन आते हैं कि जो फाइवर वाले हैं उनके लिए इश्यूज होते हैं कि उनको जो है ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो यहाँ पे जो पॉलिश वाली जो बुलेट पॉइंट है ये उनके लिए बहुत काम आएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट के फेलियर के ऊपर कि आपका अगर कोई प्रोजेक्ट फेल होता है तो वो किस वजह से होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं पेमेंट मेथड्स। तो जाहिर सी बात है, अगर आप फ्रीलांस मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आपको पे मिलेगा, मतलब पैसे मिलेंगे। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें हैं जो कि नहीं करनी, अदरवाइज आपका अकाउंट चले जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग एंड दैट इज टेक्निकल स्किल्स। और टेक्निकल स्किल्स के अंदर आपके पास
काफ़ी सारी आती हैं। अगर सॉफ्ट स्किल्स की बात करूँ जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड स्किल्स होती हैं, जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाती है, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइन, अभी यहाँ पे जो बेकिंग का जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका बेकिंग को उनको आता है, उसके बाद यहाँ पे एक और थे ब्लॉग ऑन इंस्टा, ठीक है? ये वाली चीज़ भी आती है, ब्लॉग राइटिंग है। ग्राफिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ग्राफिक्स आती है, फिर उसके बाद कंटेंट राइटिंग है। मैंने देखा यहाँ पे कंटेंट राइटिंग वाले भी हैं, तो कंटेंट राइटिंग है हमारे पास। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो ब्लॉग, ठीक है? कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है? हम लोग ब्लॉग के ऊपर आ जाते हैं। फिर डिज़ाइनिंग से हट के अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी है, ओके, ठीक है। ओके, बाकी ये चीज़ अगर आप लोगों को लगे कि मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं तो इट्स जस्ट बिकॉज आई हैव अ माइक हियर, ओके, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है टाइप में मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब ब्लॉग की बात है, फिर उसके बाद अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले भी हैं। तो इफ़ समवन हियर इसको अकाउंट्स एंड फाइनेंस का आइडिया है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, उसके बाद हमारे पास अगर कोई बैचलर्स या मार्केटिंग के स्टूडेंट है तो यहाँ पे मार्केटिंग की भी एक बहुत बड़ी डोमेन है, ठीक है? तो टेक्निकल स्किल्स के अंदर हमारे पास ग्राफिक्स आ गई, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई। अब ग्राफिक्स के बाद हमारे पास एक और है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग से ही कनेक्टेड है, जिसका नाम है वीडियो एडिटिंग। तो एक ये इलस्ट्रेटिंग वो एक्चुअल में डिजाइनिंग के उसमें आ जाती है, मतलब डिजाइनिंग में। ओके, ब्लॉगिंग फ्रीलांसिंग है। देखें, इट डिपेंड्स कि आप क्लाइंट के लिए ब्लॉग लिख रहे हो या फिर आप अपने लिए ब्लॉग लिख रहे हो। कि मेरा एक ब्लॉग है तो मैं जो है एक्चुअल में उसके ऊपर कंटेंट डालता हूँ, तो आई विल एक्सपेक्ट कि एडसेंस से मेरी उससे अर्निंग होगी। लेकिन अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए काम करता हूँ तो वो प्लेटफॉर्म से पैसे आएंगे मेरे पास, मतलब क्लाइंट मुझे पे करेगा, ठीक है? तो टेक्निकल स्किल्स, ये वो कॉमन टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, यहाँ पे ऊपर मैं थोड़ा सा चैट के ऊपर चले जाऊँ तो उसके अंदर यहाँ पे 2 क्वेश्चन से मैं अभी डिस्कस कर लूँ क्योंकि वो टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड है। और वो ये कि एक क्वेश्चन था कि इंस्टाग्राम के ऊपर ब्लॉग है बट इंस्टाग्राम जो है वो पे नहीं करता। देखिए, इंस्टाग्राम के ऊपर से अगर हम लोग मार्केटिंग की बात करें तो आप अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करके आप डिफरेंट लोगों को रीच आउट कर सकती हो, जिसके थ्रू आप जो है मार्केटिंग के ऊपर पैसे ले सकती हो, ठीक है? जस्ट लाइक ब्रांड मार्केटिंग। तो अगर आपके पास इंस्टाग्राम के ऊपर ऑडियंस है तो आप डिफरेंट ब्रांड्स को टैप कर सकते हो कि मैं आपके लिए जो ना मार्केटिंग कर सकती हूँ, ठीक है? उसके बाद एक और यहाँ पे था कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये था कि आई वांट टू स्टार्ट फ्रीलांस फ्रॉम माय डिज़र्ट आर्ट वर्क। आर्ट वर्क के अंदर आपको वही ग्राफिक्स वाली आ गई, गिफ्ट रैपिंग, ये एक अच्छी फील्ड है, मतलब आप बहुत ही स्पेसिफिक नीश के ऊपर आई हो, ठीक है? और वेडनेसडे हो सकता है हम लोग एज अ स्टूडेंट हम लोग कर सकें। तो यहाँ पे गिफ्ट रैपिंग के डिज़ाइन फाइवर के ऊपर बहुत चलते हैं। आर्ट वर्क, इट डिपेंड्स क्या आप, ये आर्ट वर्क जो है वो एक्चुअली में बहुत ही एक जेनेरिक फील्ड है, तो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक आना पड़ेगा कि आर्ट वर्क वो किस तरह का है। क्या वो गेम आर्ट है, क्या वो जो है सीनरीज जो है हमारे पास वो हैं, या किसी भी और तरह का आर्ट वर्क। उसके बाद डिजर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो केक डिज़ाइंस ये सेल हो सकते हैं, ठीक है, थ्रू फेसबुक पेज। अब अगर हम लोग आगे चलें तो फिर हमारे पास आते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी टेक्निकल स्किल्स ये हैं, उसके बाद आप जाहिर सी बात है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को सर्च करोगे, ठीक है? आप लोग फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म सर्च करोगे कि मैं अब जो है ना ये वाली चीज़ देखूँ कि मैं किस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जा सकता हूँ। मुझे तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, सन 2012 मतलब 11 के एंड और 12 से जो है मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ। उसके बाद से ना मैं एक बात ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने के बाद आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मत आओ, ठीक है? ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ऐसा हो सकता है जहाँ पे कोई कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। उससे पहले जो है मैं कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रिपेयर करने को बोलता हूँ, जिसके अंदर आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है? आपको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास सिर्फ स्किल हैं, ठीक है, आपको पता है कि आप डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप किसी को प्रूव नहीं कर सकते कि आपको काम आता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरा तकरीबन 5 साल का गेम डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, तो मैं अभी भी पिछले 3 सालों से गेम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। इवन एक सीरीज़ भी बना रहा हूँ जो कि बिगिनर्स के लिए, जो गेम डेवलपमेंट के ऊपर है। लेकिन मैंने इन 5 सालों के बाद भी अगर मैं किसी को बोलूँ कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन दिखाने को कुछ नहीं है, तो कोई वो जो है ना उस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करेगा। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग पोर्टफोलियो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। आप बनाओगे अपना पोर्टफोलियो, ठीक है? अब पोर्टफोलियो बनाने का तरीका है, आपके पास स्किल्स हैं, आपने कोई ट्यूटोरियल फॉलो करा, सबसे पहली चीज़
सबसे पहली चीज़ हम लोग आते हैं कि हाउ टू डेवलप अ पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो आइटम्स, ठीक है। अब पोर्टफोलियो आइटम्स हम लोगों को बनाने के लिए ना हमारे पास काफ़ी सारे वेज हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला वे आता है कि जब आप कोई ट्यूटोरियल फॉलो करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स की। तो आप क्या करोगे, आप अगर किसी ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ट्यूटोरियल फॉलो करने के बाद जो चीज़ ट्यूटोरियल के अंदर बताई हुई है या कोई भी चीज़ जो कि पढ़ाई हुई है, आप पहले तो उसको कॉपी कर लोगे, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन यहाँ पे ये बात खत्म नहीं हुई है। आप उसे कॉपी करके अपना पोर्टफोलियो नहीं शो कर पाओगे। आप उसके अंदर से पढ़ा हुआ जो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, आप उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके वो अपना पोर्टफोलियो बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने अगर वेक्टर ट्रेसिंग जो है ना वो सीखी है इलस्ट्रेटर के ऊपर, कि मैंने ट्रेसिंग सीख ली। मैं वो जो यूट्यूब ट्यूटोरियल है उसको एज अपना पोर्टफोलियो नहीं शो करवा सकता, लेकिन जब मैंने ट्रेसिंग सीख ली तो मैं गूगल से कोई और इमेज उठा के उसके ऊपर ट्रेसिंग करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर शो करवा सकता हूँ। ठीक है, तो दैट इज माई पोर्टफोलियो। पहला वे ये है। दूसरा जो वे हमारे पास आता है वो ये कि अगर आपने गलती कर दी है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने की, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, मैं जो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपने कर दी है, मतलब आप फाइवर के ऊपर चले गए, आप अगर अपवर्क के ऊपर चले गए तो वहां पे तो आपको अप्रूव नहीं करेगा फिलहाल के लिए, लेकिन आप फाइवर के ऊपर भी चले गए। अब आपके पास जो है ना शुरू में ऑर्डर्स आना मुश्किल होंगे, क्योंकि आप किसी को प्रूव नहीं कर सकते कि आपके पास कोई स्किल है। ठीक है, प्रूव नहीं कर पाओगे। होगा क्या कि ऐसी बात है, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो कोई आप पे यकीन नहीं करेगा। अब होगा क्या, आपको सिर्फ जॉब्स गिरेंगी लेकिन कोई आपको हायर नहीं करेगा। तो जो दूसरा वे है पोर्टफोलियो बनाने का वो यही है कि आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एज इट इज उठा लोगे। ठीक है, कुछ जॉब्स होती हैं जिसके अंदर पूरी पूरी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे नहीं लिखी हुई होती। तो जिस जॉब के अंदर पूरी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, आप क्या करोगे, आप उस जॉब के अंदर से रिक्वायरमेंट उठा लोगे। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि जो ना आप ये काम कर सकते हो नहीं, तो आप क्या करोगे, आप उसकी रिक्वायरमेंट उठा के और रिक्वायरमेंट उठाने के बाद उसको परफॉर्म करके अपना पोर्टफोलियो आइटम बना सकते हो। ठीक है, इसी से कनेक्टेड ना, यही वाली बात से कनेक्टेड एक और पॉइंट है जो कि आगे कवर लेटर के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसी बात से कनेक्ट, वो मैं दोबारा से रिमाइंड करवाऊंगा। अब तीसरा जो वे है, तीसरा ऐसा वे है जो कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये वो वे है, अगर आपके पास और कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही ना, तो फिर आप इस वे के ऊपर जाओ। अदरवाइज जो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं और जो इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन है उससे आप काम कर सकते हो। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो के लिए। तीसरा जो वे है, आप क्या करो, आप फेसबुक के ऊपर जाओ, आप जिस स्किल से जो ना ताल्लुक रखते हो, फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइन से रखते हो या आप कंटेंट राइटिंग से रखते हो, डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, किसी भी फील्ड से रखते हो, आप उसके फ्रीलांसिंग ग्रुप को सर्च करो फेसबुक के ऊपर। ठीक है, आपको बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लोग जो है मतलब एक्टिव हैं और ज़्यादा लोग मेंबर्स हैं। आप क्या करोगे, आप वहाँ पे ये पोस्ट करोगे कि आई एम ए कंटेंट राइटर और मैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए किसी भी बंदे का एक छोटा-सा काम करके दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो अब मेरा अपना जितना एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स का या फ्रीलांसिंग ग्रुप्स का, तो वहाँ पे अगर कोई बंदा ऐसी कोई पोस्ट करता है, तो उसके पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज़ आते हैं। तो आपको लोग बना के दिन जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट देंगे और आप जो है उनको वो चीज़ बना के दो। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी के बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर हाथ डालो। ठीक है? अब या अगर आप खुद ही बिगिनर हो, तो आप किसी बड़े काम को मत पकड़ो, छोटा काम करो सिर्फ़ अपना पोर्टफोलियो डेवलप करने की, ठीक है? तो द फर्स्ट पॉइंट वाज़ आप जो है ट्यूटोरियल, उसके बाद दूसरा रिक्वायरमेंट फ्रॉम द जॉब, जॉब पोस्ट और तीसरा फेसबुक मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ। ठीक है, अब हमारा पोर्टफोलियो बन गया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि आपके पास जो है, जो पोर्टफोलियो है वो इस लेवल का है या नहीं है। ये भी एक चीज़ आती है। आपके पास अगर 10 पोर्टफोलियो आइटम्स हैं और 10 के 10 आप खुद जज कर सकते हो कि यार ये मतलब ऐसा नहीं है। देखिए यूजुअली तो ये होगा कि अगर आप ऑनलाइन किसी और बंदे का काम देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको उससे थोड़ा-सा डीमोटिवेशन इस तरीके से मिलेगी कि आपको काम करने का दिल नहीं करेगा। बोलेगा यार मुझे इस लेवल के ऊपर काम कौन देगा? आपको क्या करना है, आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा-सा इम्प्रूव करना है और अपने अगर 50 पोर्टफोलियो आइटम्स आपने बना लिए हैं, आप उसमें से टॉप 10 सेलेक्ट करोगे, ठीक है? आपका 50 पोर्टफोलियो आइटम फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर नहीं रखा होगा, ठीक है? आप सिर्फ टॉप 10 शो करवाओगे। अब पोर्टफोलियो आपने बना लिया। पोर्टफोलियो बनाने के बाद जो है ना, आप आओगे फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। आप सेलेक्ट करोगे कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आपको जाना चाहिए।
टॉप के ऊपर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, लेट मी जस्ट राइट डाउन, सेलेक्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को जो सिलेक्ट करने के काफ़ी सारे वेज हैं। मतलब आप क्या करोगे, आप टॉप 5 उठा लोगे, सही है। आपने टॉप 5 सर्च करा गूगल के ऊपर, आपको कौन से मिलेंगे? आपको अपवर्क मिलेगा, फाइवर मिलेगा, फ्रीलांसर मिलेगा, गुरु मिलेगा, 99 डिज़ाइंस के नाम से एक है वो भी मिल जाएगा, ठीक है, पीपल पर आवर भी है वो भी मिल जाएगा। लेकिन आप जो है इतने सारों पे एक साथ नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि दो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर पीपल पर आवर है और जो अपवर्क है उसके ऊपर आपको इश्यूज आएंगे। ठीक है, स्टार्ट में आपको इश्यूज आएंगे। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपवर्क के ऊपर जाओ पहले अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, कि अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्वाइन नहीं करा आप अपवर्क के ऊपर मत जाओ। ठीक है, अपवर्क के बजाय आप freelancer.com के ऊपर जाओ। मैं बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ freelancer.com। ठीक है, freelancer.com से स्टार्ट लोगे, इसी के साथ आप फाइवर से स्टार्ट लोगे। मैं हालांकि फाइवर को सपोर्ट नहीं करता, ऑनेस्टली मुझे फाइवर बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं है, मैं फाइवर को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन मैं बोलता हूँ स्टार्ट के लिए आप इन दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाओ, इसी के साथ साथ guru.com के नाम से भी एक वेबसाइट, ठीक है। ये 3 वेबसाइट्स हैं जो कि मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। अपवर्क हो गया या पीपल पर आवर हो गया, वहां पे आपको सॉर्ट ऑफ पे करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ कनेक्ट्स। हम लोग पढ़ते हैं कनेक्ट्स क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ कनेक्ट्स आपको पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ना लोग थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि कनेक्ट्स होते हैं वो सारे हम लोग पढ़ते हैं। आपने 3 प्लेटफॉर्म समझ लिए कि आपको जो है ना टॉप 5 के प्लेटफॉर्म्स मिले, लेकिन आप उनके ऊपर नहीं गए। अब आपने इन तीनों के ऊपर अकाउंट बना लिया, लेकिन आपको कुछ नहीं पता कि इसके ऊपर काम किस तरीके से करते हैं, सही है, नहीं पता। हम लोग अब वो पढ़ते हैं कि एक्चुअल में जब आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को सर्च करते हो, आपने टॉप 5 देख लिए, इनको मतलब इन पे काम किस तरीके से करते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को उठाओ, भले वो फ्रीलांसर हो, भले वो फाइवर हो, गुरु हो, पीपल पर आवर हो, 50 के करीब जो है ना आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स मिल जाएंगी। लोकल इंडिया की भी मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की भी मिल जाएगी, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज की अपनी अपनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, आपको मिल जाएंगी। लेकिन सारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ऊपर ना आपको दो चीजें सिमिलर मिलेंगी उनके मैकेनिक्स के हिसाब से। या तो उसका जो पहला मैकेनिक्स होगा, मतलब वर्क फ्लो जो होगा, वो अखबार वाला होगा, ठीक है, या फिर वो बाजार वाला होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्रीलांसिंग वर्क फ्लो, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में अखबार आता है? ओके, अखबार के अंदर क्या कभी किसी ने जॉब पोस्ट देखी है? ओके, आपने जॉब पोस्ट पढ़ ली, उसके बाद आपकी वो जो है ना आपको लगा कि जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो उस जॉब पोस्ट से मैच कर रही हैं, तो आप लोग क्या करोगे? ओके, आप अप्लाई करोगे। अब ना मैं एक काम करता हूँ, जो आप लोग जो बता रहे हो, ठीक है, आप लोग जो बता रहे हो मैं उसको लिस्ट डाउन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास रिस्पॉन्स आया था कि आप लोगों ने ऐड देखा अखबार के ऊपर, तो आप लोगों ने करा इसको ऐड इन न्यूज़पेपर, ठीक है। आप लोगों ने फिर अपनी स्किल्स मैच करी, उसके बाद मैथ स्किल्स, उसके बाद नेक्स्ट टाइप क्या था, आप लोगों ने ही बताया था अप्लाई, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट, हाँ, ठीक है, अप्लाई करा। अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे? जब आप लोगों को अप्लाई करना होगा उस जॉब के ऊपर, सीवी बनाओगे, ठीक है। गूगल में वेबसाइट, वो आप बाद में चेक करोगे, अभी नहीं चेक करोगे, ठीक है। अप्लाई के लिए आप बनाओगे अपनी सीवी, या अगर सीवी बनी हुई तो आप अपडेट कर दोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? ओके, आप लोगों ने सीवी ईमेल कर दी, देन उसके बाद क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपकी सीवी इनको पसंद आ गई और जो है ना उनको लगा कि आप जो है उनकी रिक्वायर्ड स्किल्स से मैच करते हो। वेट फॉर द रिस्पॉन्स, ठीक है, वेट फॉर द रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या, उनकी इंटरव्यू कॉल आ गई,
इंटरव्यू कॉल के बाद क्या होगा? शॉर्ट लिस्ट, यहाँ पे एक आंसर है, शॉर्ट लिस्ट। उसके बाद क्या होगा? आपने शॉर्ट लिस्ट वाला जो है मतलब फर्स्ट इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया, सेकंड इंटरव्यू भी आपने क्लियर कर लिया। फॉर एग्जांपल सेकंड इंटरव्यू अगर किसी का हुआ हो तो सेकंड इंटरव्यू के अंदर क्या होता है? पहले इंटरव्यू में यूजुअली लोग टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं, सेकंड इंटरव्यू के अंदर क्या होता है? सैलरी पैकेज। ठीक है, सैलरी पैकेज। आप लोगों ने क्या करा? एक मिनट, वन सेकेंड। आप लोगों ने सैलरी पैकेज डिस्कस करा, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब वो जो टाइमिंग एंड डेज या वर्किंग आवर्स वो बात की चीज है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इसका मतलब है आप और क्लाइंट या आप और जो एम्प्लॉयर था वो किसी एक टर्म के ऊपर आ गए और उसके बाद काम शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब स्टार्ट, ठीक है। ये एक चीज है अभी अखबार वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज है, आप लोगों में से ये बताओ किस किस ने, वैसे ये वाली बात अजीब सी है थोड़ी सी, लेकिन ऐसा कोई है जो कि कभी बाजार नहीं गए हो? मतलब आप लोगों में से कौन लोग ऐसे हैं जो कि बाजार गए हैं, या ऐसा कोई है जो किसने कभी बाजार नहीं देखा? ओके, एवरीवन, यस एवरीवन। कोई अगर बोले तो वो झूठ बोल रहा है। अब देखो, आप सब लोग बाजार के अंदर गए होंगे, बाजार के अंदर आप लोगों को क्या चीज दिखती है? ओके, क्या चीज दिखती है? सेल्स दिखती हैं, लेकिन सेल्स तो थोड़ी सी मतलब बात की चीज है। वैरायटी, शॉप्स दिखती हैं, ठीक है। वेंडर्स दिखते हैं, ये एक परफेक्ट है, ठीक है। अगर मैं एड इन न्यूज़पेपर की बात करूं, और सेकंड जो है हमारे पास शॉप्स दिखती हैं या वेंडर्स दिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग शॉप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, बल्कि शॉप के अंदर चले जाते हैं। आप लोग क्या करते हो? शॉप के अंदर चले गए, उसके बाद क्या करते हो? ठीक है, चूज किस चीज में से? मतलब हर शॉपकीपर या हर वेंडर को प्रोडक्ट्स, हर वेंडर प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ होता है, ठीक है। हर वेंडर प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो? आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, परचेज, आस्क फॉर प्राइस, ठीक है। आस्क फॉर प्राइस। मैं अगर बात करूं, आई एम नॉट रियली श्योर, इट्स इट्स अ लिटिल बिट कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट कि मैं अगर बात करूं, मैं अगर बाजार जाता हूं, मुझे अगर कुछ चीज समझ आई, मैं बस लेकर आ जाऊंगा। बार्गेनिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ठीक है। लेकिन बाजार में जब यूजुअली आते हैं, फीमेल्स का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है इसमें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि वो अगर जाती हैं वो प्राइस की बात करती हैं, ठीक है। प्राइस की बात करती हैं, उसके बाद निगोशिएट करती हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो? आप निगोशिएट करते हो। निगोशिएट करने के बाद क्या होता है? एक पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट, सेटलमेंट, ठीक है। अग्री ऑन प्राइस, ठीक है। उसके बाद डिसीजन, हाँ ठीक है। एग्री ऑन प्राइस, उसके बाद हाँ हम लोग डिसीजन लेते हैं। जब हम लोग प्राइस के ऊपर एग्री हो गए, वी बाय इट, ठीक है। हो गया, सही है, कंप्लीट हो गया। दोनों वर्क फ्लो कंप्लीट हो गए, सही है। अब हम लोग एक काम करते हैं। पहले हम लोगों ने यहाँ पे मतलब सबको आइडिया था, और ये दोनों ऐसे मैकेनिक्स हैं जिनका आप लोगों को ऑलरेडी है, मतलब आइडिया है, लेकिन आप लोगों ने कभी उसको रिलेट नहीं करा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से। देखिए, जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग लोकली भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, तो जाहिर सी बात है जो वर्क फ्लो है वो भी तो सिमिलर होगा हमारे लोकल से और ऑनलाइन से, ठीक है, सिमिलर होना चाहिए। मैंने जब बात करी फ्रीलांसिंग वर्कफ्लो की, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, आपको सिर्फ दो तरह के जो है वो मैकेनिक्स दिखेंगे। या तो वहां पे अखबार वाला मैकेनिज्म चल रहा होगा, या फिर वहां पे बाजार वाला मैकेनिक्स चल रहा होगा। इसके अलावा और कोई मैकेनिक्स नहीं है।
ठीक है, आप कोई सी भी मिसाल उठा लो, आप फ्रीलांसर उठा लो, अपवर्क उठा लो, guru.com उठा लो, इवन पीपल पर आवर के ऊपर तो दोनों ही हैं, ठीक है, कोई सा भी उठा लो, आपको बाजार वाला या फिर न्यूज़पेपर वाला मैकेनिक्स दिखेगा। अब हम लोग ना इसको टेक्निकली एस्पेक्ट की तरफ आ जाते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब अगर हम लोग बात करें अपवर्क, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ अपवर्क, उसके बाद फ्रीलांसर और उसके बाद गुरु। ये 3 वेबसाइट्स हैं जो कि मेनली चलती हैं अपवर्क, ठीक है, ये मेनली चलती है न्यूज़पेपर वाला मैकेनिक्स के ऊपर, कि वहाँ पे जिस तरीके से हम लोग लोकली ऐड देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, अपवर्क के ऊपर क्लाइंट साइन अप करके अपनी जॉब पोस्ट करता है, ठीक है, जॉब पोस्ट करके वो ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी बंदा जिसको काम चाहिए होगा वो उसकी जॉब पोस्ट के ऊपर अप्लाई करेगा, जस्ट लाइक कि जिस तरीके से जब क्लाइंट न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कोई बंदा उसकी जॉब के ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक है, न्यूज़पेपर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब जब हम लोग न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो और उसके बाद साथ हम लोग जब अपवर्क के ऊपर आए थे या फ्रीलांसर के ऊपर या guru.com के ऊपर आए थे, तो वहाँ पे जॉब पोस्ट होती हैं, क्लाइंट ने साइन अप कर लिया और वो जॉब पोस्ट करेगा। उसके बाद जो है ना बारी आती है फ्रीलांसर की, मतलब क्लाइंट ने अपनी जॉब पोस्ट करके काम अपना कर लिया, ठीक है। अब आप एज अ फ्रीलांसर अपवर्क के ऊपर freelancer.com के ऊपर या guru.com के ऊपर ज्वाइन करते हो, उसके बाद उन जॉब्स में से सर्च करते हो, ठीक है, आप उनको सर्च करते हो और ये देखते हो कि यार कौन सी जो जॉब है वो मेरी स्किल से मैच कर रही है, तो इस एग्जैक्टली सेम थिंग जो कि आप अखबार के हाथ कर रहे होते हो, आप वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपको ये वाली चीज समझ आ जाए कि वो जो जॉब है वो आपकी स्किल से मैच कर रही है, आप क्या करोगे, आप उस जॉब के ऊपर अप्लाई करोगे, ठीक है, तो अप्लाई ऑन जॉब्स एग्जैक्टली सेम। अब जब हम लोग सीवी की बात करते हैं लोकल मार्केट के अंदर, तो लोकल मार्केट के अंदर हम लोग सीवी सेंड करते हैं, और ऑनलाइन मार्केट जिसके अंदर अपवर्क फ्रीलांसर और गुरु है, इसके ऊपर हम लोग अपना प्रपोजल सेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कवर लेटर भी बोल सकता है, लेकिन प्रपोजल और कवर लेटर में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। लोकल मार्केट के अंदर हम लोग सीवी सेंड करते हैं और ऑनलाइन मार्केट के अंदर हम लोग प्रपोजल सेंड करते हैं, ठीक है। अब जो ईमेल वाली बात थी वो यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। ऑनलाइन मार्केट के अंदर ईमेल के ऊपर ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं होती, क्योंकि जो रिस्पॉन्सेज और कन्वर्सेशन है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही होती है। आपने क्या करा, ईमेल वाला जो फैक्टर है वो यहाँ से हट गया, ठीक है, क्योंकि ईमेल आप सीवी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने जॉब पोस्ट के ऊपर प्रपोजल फेंका है या प्रपोजल करा है या सबमिट करा है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको सेंड भी कर रहे हो और रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो फ्रीलांस मार्केट से आपके हट गए जो कि लोकली थे। देन क्लाइंट को आपकी चीज समझ आ गई, आपने प्रपोजल भेजा, क्लाइंट को वाला समझ आ गया। उसके बाद क्या हुआ, क्लाइंट ने जो है आपके साथ इंटरव्यू फेज शुरू कर दिया, उसने आपको डायरेक्ट मैसेज सेंड कर दिया। जस्ट लाइक मुझे एक जो है कोई पोस्टर बनवाना था, मैंने पोस्ट कर दिया एज अ क्लाइंट, मेरे पास किसी फ्रीलांसर का मैसेज आ गया जिसके अंदर उसका प्रपोजल था, मुझे समझ आया उस बंदे का काम, उसका पोर्टफोलियो मुझे समझ आया, मैंने क्या किया, मैंने उसको मैसेज भेज दिया। जैसे ही मैंने उसको मैसेज भेजा वो वाला फेज हो गया इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू और जो लोकल इंटरव्यू है वो एग्जैक्टली सेम है। हाउ टू सेंड ये हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आगे आ रहे हैं, ये वाले वर्क फ्लो के बाद हम लोग उस चीज के ऊपर आएंगे, ठीक है। फर्स्ट इंटरव्यू हो गया आपका, ठीक है, मैंने आपको मैसेज सेंड करा और आपने मुझे रिस्पॉन्स करा और हम लोग की सारी डीलिंग हुई, सब कुछ हो गया। शॉर्ट लिस्ट, सैलरी पैकेज और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये तीनों एक ही फेज के अंदर होते हैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर अपवर्क, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर और गुरु है, ठीक है। तो ये वाली तीनों चीजें एक साथ हो गई, जिसके अंदर क्लाइंट ने आपको शॉर्टलिस्ट भी करा, सैलरी पैकेज की भी डिस्कशन हो गई, और उसने आपको एक एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दिया। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, पढ़ेंगे हम लोग, एक आवरली है और एक फिक्स प्राइस है, ये सारी डिटेल्स इसी सेशन में आएंगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जॉब स्टार्ट हो गई, ठीक है, आप लोगों की जॉब स्टार्ट हो गई। जिस तरीके से न्यूज़पेपर का मैकेनिक्स है, इसी तरीके से हमारे पास अपवर्क, फ्रीलांसर और guru.com का सेम मैकेनिक्स है, ठीक है। अब ये वाला हो गया मैकेनिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास मैकेनिक्स जो मैंने आप लोगों से ही निकलवाया है, ये वाली सारी बातें आप लोगों की ही लिखी हुई है और जो कि बिल्कुल ट्रू है, मतलब 100% करेक्ट है, वो है बाजार वाला मैकेनिक्स। और बाजार में क्या होता है,
बाजार के अंदर शॉप्स होती हैं, वेंडर्स होते हैं, शॉप्स के बजाय वैसे वहाँ पे स्टॉल्स होते हैं। हर शॉप या वेंडर के पास या हर स्टॉल या वेंडर के पास अपने कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस लिखी हुई होती है, प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई होती हैं, डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपको जो कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो आप उससे नेगोशिएट करते हो, प्राइस के ऊपर एग्री करते हो और ख़रीद लेते हो। जब हम लोग बाज़ार वाले मैकेनिक्स के ऊपर आ जाते हैं तो आप जो कि बाज़ार के अंदर जा रहे हो, इसी तरीके से क्लाइंट फाइवर के ऊपर आता है, ठीक है। तो अगर शॉप वाले मैकेनिक्स की बात करूँ तो फाइवर बहुत पॉपुलर है इस मामले में, ठीक है, फाइवर और इवन पीपल पर आवर, ठीक है। तो पीपल पर आवर के ऊपर दोनों मैकेनिक्स चलते हैं। उसके ऊपर जो है वो शॉप वाला मैकेनिक्स भी है, उसके अंदर न्यूज़पेपर वाला मैकेनिक्स भी है। मैं अभी जो जनरल टर्म्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जिस बंदे को कुछ भी नहीं पता ना, उसको समझ आने लग जाए। देन लेटर ऑन हम लोग जो है टेक्निकल वर्ड्स के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो फाइवर अब जब हम लोग फाइवर और पीपल पर आवर की बात करते हैं तो वहाँ पे इसी तरीके से होता है। आप एज अ फ्रीलांसर अपना एक स्टॉल लगाते हो, ठीक है। फाइवर के ऊपर आप अपना एक स्टॉल लगाते हो, उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हो। मैंने स्टॉल की जो बात करी है उसका मतलब है आप अकाउंट बनाते हो फाइवर के ऊपर, और जिस तरीके से बाजार के अंदर प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं इसी तरीके से फाइवर के ऊपर हमारी गिग्स रखी हुई होती हैं, ठीक है। अब जब प्राइस की बात आ गई, ठीक है, प्राइस की बात जब हम लोग यहाँ पे लोकल मार्केट के अंदर है तो यहाँ पे गिग के अंदर ही प्राइस और डिस्क्रिप्शन रखी हुई होती है। तो गिग के अंदर ही प्राइस प्लस डिस्क्रिप्शन रखी हुई होती है, ठीक है। तो जब आप फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो इट्स जस्ट लाइक यू आर रजिस्टरिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एज अ सेलर, ठीक है, या एज अ वेंडर, कि आपके पास कुछ गिग्स होंगी, उस गिग के अंदर आपकी सारी गिग के अंदर कोई ना कोई प्राइस और कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन लिखी भी होगी, जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट ऑन अ स्टॉल इन अ बाजार, ठीक है। अब क्लाइंट आ गया, ठीक है, क्लाइंट को आपकी चीज खरीदनी है, जिस तरीके से आप बाजार जा रहे हो फाइवर के ऊपर क्लाइंट आ गया और क्लाइंट ने जो है ना आपकी गिग देखी, उसके बाद उसने आपसे बात शुरू करी, तो क्लाइंट कैन सेंड यू अ मैसेज, ठीक है। वो डायरेक्ट खरीद भी सकता है कि मतलब मैं अगर बाजार गया तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट देखा, हाँ भाई ठीक है मैं ले लेता हूँ, मैंने कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, हाँ भाई मैं ये लो पैसे। फाइवर के ऊपर इसी तरीके से होता है कि फाइवर के ऊपर दो ऑप्शंस हैं। फाइवर के ऊपर क्लाइंट आपकी डायरेक्ट चीज़ बाय भी कर सकता है और क्लाइंट आपसे डिस्कशन करके, ठीक है, फर्दर डिस्कशन करके कुछ निगोशिएट करके आपसे कस्टम ऑफर भी ले सकता है, ठीक है। तो चीज़ बाय हो गई, जिस तरीके से बाजार के अंदर, बाजार में उसने आपको प्रोडक्ट दे दिया। जब आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हो तो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जैसे ही वो आपकी सर्विस बाय करता है आप उसे काम करके देते हो, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग का जो न्यूज़पेपर हमारा मैकेनिक्स है वो, और उसके बाद जो गिग वाला मैकेनिक्स है वो, दोनों हो गए। अब हम लोग ना वर्क फ्लो की बात करते हैं। ये तो मैंने एक मतलब थोड़ा सा टेक्निकल ओवरव्यू बता दिया, लेकिन काम किस तरीके से करते हैं। मैं अगर अपवर्क की बात करूँ या फाइवर की बात करूँ, इस पे काम किस तरीके से होगा, मैंने आपको जनरल एग्जांपल दे दी, मैंने उसको रिलेट भी कर दिया फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, लेकिन उसके ऊपर काम किस तरीके से करते हैं सबसे बड़ी चीज़ आती है। उसके बाद सर सो दे रिस्पॉन्ड आफ्टर द जॉब स्टार्ट, नहीं, दोनों सिचुएशंस के अंदर अपवर्क फ्रीलांसर फाइवर के अंदर और गुरु जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर काम शुरू होने से पहले की डिस्कशन होती है, ठीक है। आप रिलेट करो उसी तरीके से जिस तरीके से लोकल मार्केट के अंदर हमारी डीलिंग होती है बाजार के अंदर सॉरी, बाजार के अंदर अगर आप कोई चीज़ बाय करने जाते हो तो आप जाहिर सी बात है डिस्कशन करोगे ना। इसी तरीके से जब क्लाइंट कुछ चीज़ बाय करने आएगा तो आप जो है ना उससे डिस्कशन करोगे। इसी तरीके से जब क्लाइंट आपको हायर कर रहा होगा तो क्लाइंट हायर करने से पहले आपसे बात करेगा, ठीक है। अब अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वर्क फ्लो, ठीक है। और वर्क फ्लो की अगर मैं बात करूं तो आपको, जब भी हम लोग न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो अपवर्क की बात कर लें या फाइवर की बात कर लें, ये सिमिलर मैकेनिक्स जो है ना उसके ऊपर काम करते हैं कि अपवर्क, फ्रीलांसर और गुरु, इनका वर्क फ्लो सेम है, वर्क फ्लो सेम है। उसके बाद जब हम लोग फाइवर की बात करें तो उसका वर्क फ्लो जो है वो सिमिलर है पीपल पर आवर से। अब जब हम लोग अपवर्क की बात करें, सबसे पहला काम आप क्या करते हो, आप साइन अप करते हो, ठीक है, और साइन अप एज अ फ्रीलांसर करते हो, ठीक है। ये वर्ड यूज होता है फ्रीलांस एज अ फ्रीलांसर, क्या आप वहाँ पे एज अ क्लाइंट भी साइन अप कर सकते हो
लेकिन जब आपको काम करना है तो आप जाहिर सी बात है आप साइन अप एज अ फ्रीलांसर करोगे। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है, जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हो। ठीक है, कंप्लीट योर प्रोफाइल। अब प्रोफाइल कंप्लीट करने में ना हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, क्योंकि इसके आगे का जो स्टेप है वो प्रोफाइल अप्रूवल का है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। मतलब कोई भी अगर बंदा प्रोफाइल बना लेगा ना, उसकी प्रोफाइल हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। मतलब हो सकता है नहीं, मोस्टली यही होता है क्या कि प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो प्रोफाइल आप लोगों की रिजेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेप क्या है कि आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हो। अब प्रोफाइल कंप्लीट करने की ना कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज ये कि आप जो नेम यूज करोगे वो आपका एनआईसी वाला नेम होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वाली बात, मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, जब हम लोग पेमेंट मेथड्स के ऊपर आएंगे तो ये वाली चीज को दोबारा से रिवाइज करेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपका जो नेम है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो कि आपके एनआईसी का नेम है। ठीक है, तो आप जो नेम यूज करोगे इट हैज टू बी योर एनआईसी नेम। ठीक है, नेम शुड बी द सेम एज एनआईसी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास आती है, वो आती है आपकी प्रोफेशनल पिक्चर। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ देखी है, मतलब मैंने कुछ लोगों की मिस्टेक्स देखी हैं। कुछ लोगों ने मतलब मैं पिछले तकरीबन 2 साल हो गए मैं अपना एक पेज भी चला रहा हूँ जिसके अंदर मैं लोगों को थोड़ा-सा गाइड करने की कोशिश करता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। मैंने वहाँ पे ना एक बहुत बड़ी गलती देखी है, वो ये कि लोगों की प्रोफाइल पिक्चर्स सही नहीं होती। अब उसमें क्या होता है, मैं अगर कोई एक काम करवाने की सोच रहा हूँ और मैं अगर कहीं जॉब पोस्ट करता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो तस्वीर या कोई बंदा मेरे पास आएगा तो उसका जो मतलब जो व्यू होगा वो थोड़ा-सा प्रोफेशनल होगा। लोग क्या गलती करते हैं, लोग प्रोफेशनल पिक्चर्स नहीं डालते। ठीक है? तो आपको सेल्फी नहीं डालनी, ठीक है? आपको सेल्फी नहीं डालनी, आपको थोड़ी-सी प्रोफेशनल पिक्चर रखनी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कोट पैंट पहन के जो है ना, आप कोई तस्वीर खिंचवाओ। ठीक है? तो सिर्फ़ एक बैलेंस रखना है कि ना वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो, ना वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम हो। ठीक है? अब सेकंड चीज़ क्या है कि आपको प्रोफाइल पिक्चर शुड बी प्रोफेशनल। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप सब लोगों के साथ मसला होगा अगर आप स्टूडेंट हो या अगर आप लोगों ने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं करा हुआ, सबसे ज़्यादा मसला ये होगा वो होगा आपके प्रोफाइल ओवरव्यू का। प्रोफाइल ओवरव्यू का मतलब है कि आपने इन शॉर्ट आपने क्या काम करा है, आपके बारे में मतलब मेरी अपनी बड़ाई, मैं अगर कहीं पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा। अब अगर कोई बंदा जिसने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं करा तो ज़ाहिर सी बात है उसको कंटेंट मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी कि यार मैं लिखूँ क्या। ठीक है, प्रोफाइल ओवरव्यू। प्रोफाइल ओवरव्यू के अंदर आप क्या करोगे, आपने जितनी चीज़ों के ऊपर काम करा है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर काम करा है, आप वो लिखोगे। ठीक है, वही लिख दोगे फिलहाल के लिए। आगे कुछ चीज़ें जो कि आपके पास से मिस होंगी। मेंशन योर पास्ट वर्क। और पास्ट वर्क का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या काम करा हो। आपने अगर पोर्टफोलियो के भी अपना कुछ काम करा है जो कि आपको स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो आप मेंशन करोगे। मेंशन योर पास्ट वर्क। उसके बाद आप जो है अपनी स्किल्स लिखोगे। आपकी कौन-कौन सी स्किल्स के ऊपर ना आपको बेहतर तरीके से काम आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़ोटोशॉप के ऊपर काम करता हूँ या मैं इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करता हूँ, तो इलस्ट्रेटर के ऊपर किन चीज़ों के ऊपर मुझे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, मैं वो चीज़ें मेंशन करूँगा। ठीक है? आप 1 से डेढ़ पैराग्राफ के अंदर अपना प्रोफाइल ओवरव्यू कंप्लीट कर लोगे। देन उसके बाद आती है एजुकेशन वाली बात। ठीक है? प्रोफाइल ओवरव्यू के अंदर जब आप एजुकेशन सेट कर रहे हो तो मेरे भाई एक बात याद रखो, किसी क्लाइंट को ये परवाह नहीं है कि आपने किसी स्कूल से जो है ना मैट्रिक करा है, ऑनेस्टली। ठीक है, तो आपके किसी क्लाइंट को परवाह नहीं है या आप लोगों को भी परवाह नहीं होगी मैंने कौन से स्कूल से पढ़ा है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, स्कूल की भी डिटेल्स डाल रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग मतलब स्कूल की अपनी डिटेल्स डालने की कोशिश करोगे, मत डालना, ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कोई कोर्स करा है जो कि आपका जो स्किल सेट है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, आप वो चीज़ डालोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर ना ये नहीं डाला हुआ कि मैंने कौन से स्कूल से जो है मैट्रिक करा है। मैंने ये भी नहीं डाला हुआ कि मैंने कौन से कॉलेज से पढ़ा है। ठीक है, हाँ मैंने ये ज़रूर डाला है कि मैं अगर गेम डेवलपर हूँ तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से बैचलर्स प्रोग्राम करा है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, तो एजुकेशन के अंदर स्कूल इग्नोर करो। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन करी हुई है, अगर आपने कोई कोर्स करा हुआ है, भले वो शॉर्ट कोर्स है लेकिन वो आपकी स्किल से मैच कर रहा है, आप वो चीज़ डालोगे। अब अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट फाइनेंस का बंदा है,
ठीक है, या अकाउंटेंट फाइनेंस का कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है और वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर उसने कोई ग्राफिक डिजाइन का एक कोर्स करा था 2 महीने का और उसने वो चीज़ डाली है, वो इर्रेलेवेंट है, ठीक है? वो इर्रेलेवेंट है, आप वो नहीं डालोगे, सही है? तो आप एजुकेशन करोगे, फिर उसके बाद है प्रीवियस वर्क हिस्ट्री। जिन लोगों के पास अगर हिस्ट्री है, आप वो डालो, उसके बाद जिनके पास नहीं है, वो इग्नोर करो। अब एक चीज़ ना यहाँ पर आती है, अब अगर किसी के पास वर्क हिस्ट्री ऐसी है जो कि बिल्कुल इर्रेलेवेंट है, ठीक है? मैं अभी गेम डेवलपर हूँ, ठीक है? मुझे 5 साल हो गए, लेकिन मैं तकरीबन 8 साल पहले कॉल सेंटर एजेंट था, ठीक है? लेकिन मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर कहीं भी ये वाली चीज़ मेंशन नहीं करी हुई कि आई वाज़ अ कॉल सेंटर एजेंट फॉर मोर देन 2 इयर्स या 3 इयर्स। तो आप लोग आप लोग क्या करोगे? आप लोग जो है रेलेवेंट चीज़ डालोगे, ठीक है? व्हाट इफ समवन इज़ सेल्फ टॉट लाइक थ्रू यूट्यूब, मतलब मेंशन कर सकते हो। लेकिन आप यूट्यूब को एज़ अ वर्क हिस्ट्री नहीं डालोगे, आप यूट्यूब से अपना पोर्टफोलियो बना लोगे, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के अपने प्रोफाइल ओवरव्यू के अंदर आप ये लिख सकते हो कि यू आर अ सेल्फ टॉट डेवलपर समथिंग, ठीक है? तो एजुकेशन, फिर उसके बाद वर्क हिस्ट्री आ जाती है। वर्क हिस्ट्री के बाद आप अपनी प्रोफाइल करोगे सबमिट, ठीक है? अदर एक्सपीरियंसेस भी हैं, लेकिन वो फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है? उसके बाद आप करोगे प्रोफाइल सबमिट। प्रोफाइल सबमिशन, प्रोफाइल सबमिट होने के बाद अपवर्क जो है आपकी चीज़ें इवैल्यूएट करेगा और उसी की बेस के ऊपर आपकी प्रोफाइल अप्रूव या फिर रिजेक्ट करेगा, ठीक है? जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी तो वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो गई है, देयर आर सम रीजंस जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट होती है। पहला रीज़न क्या है? सबसे पहला जो है ना, मोस्टली आप लोगों के साथ ये होगा, रिजेक्शन आएगी, ठीक है? आप लोगों ने अगर चीज़ें सेट नहीं करी हैं, आप लोगों की प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी, अपवर्क नहीं करेगा, ठीक है? और रीज़न क्या होता है? मैंने जो देखा है, आप लोग यूज़ करते हो ब्रॉड टैग्स, ठीक है? आपने प्रोफाइल ओवरव्यू के अंदर जब आप प्रोफाइल सेट कर रहे होते हो, तो आप वहाँ पे ये चीज़ मेंशन करते हो। लेट मी जस्ट प्रोफाइल सबमिशन में मैं एक सेपरेट पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है? तो जब हम लोग प्रोफाइल बना रहे होते हैं, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग अपनी स्किल सेट करते हैं और स्किल सेट करते हुए लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं ब्रॉड टैग्स। अब ब्रॉड टैग का मतलब क्या है? ब्रॉड टैग का मतलब ये है कि कोई भी बंदा अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, तो आप किसी को सिर्फ़ ग्राफिक डिज़ाइन की बेस के ऊपर ना, ये सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकते कि आप वाक़ई में उससे काम कर सकते हो, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल ये है, मुझे अगर अपना लोगो बनवाना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपना एक गेमिंग चैनल है मेरा और मैं उसका लोगो बनवाना चाहता हूँ और मैं कहीं जॉब पोस्ट करता हूँ, मेरे पास एक बंदा आता है कि यार मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं उसकी बात सुन लूँगा, लेकिन मुझे एक सैटिस्फैक्शन नहीं आएगी कि वो मेरा काम कर सकता है या नहीं। इसके बरअक्स अगर कोई और बंदा मेरे पास आता है जो कि बोलता है कि यार मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ, जो ये गेमिंग के जो लोगोज़ हैं उनके ऊपर जो है ना ज़्यादा मैंने काम करा हुआ है। मैं उसकी बात के ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे करूँगा, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप ब्रॉड टैग्स के बजाय जो कि ग्राफिक डिज़ाइन है, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइन बहुत बड़ा टैग है। उसके अंदर माइक्रो नीश या सब नीशेज़ आती हैं, आप उनको टारगेट करोगे। आप ग्राफिक डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है? या अगर मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे चले जाऊँ, आप वीडियो एडिटिंग सेलेक्ट नहीं करोगे, आप कंटेंट राइटिंग नहीं करोगे। कंटेंट राइटिंग के अंदर अगर कोई फ़ील्ड आती है, आप वो चीज़ मेंशन करोगे, ठीक है? डेवलपमेंट की बात है, यहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी आ जाती है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर जब हम लोग आते हैं, फिर उसके बाद एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट भी आती है, आईओएस ऐप डेवलपमेंट भी आती है, ठीक है? आप लोग ब्रॉड टैग्स के ऊपर नहीं जाओगे, जेनेरिक वर्ड्स के ऊपर नहीं जाओगे, आप स्पेसिफिक वर्ड्स के ऊपर आओगे, ठीक है? उसके बाद ये मार्केटिंग की जब हम लोग बात करते हैं, बहुत तरह की मार्केटिंग है यार, टेली मार्केटिंग भी है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है। तो बहुत सारी आपके पास फ़ील्ड्स हैं। आप लोग कोशिश करोगे कि स्किल्स सेट करते हुए जब आपके पास ऑप्शन आएगा स्किल सेट करने का, आप 10-15 मिनट ना सिर्फ़ सोचोगे। जल्दबाज़ी नहीं करना। हाँ, एक और चीज़, एक और गलती लोग क्या करते हैं, प्रोफ़ाइल कंप्लीट करने के ऊपर ना लोग टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, जो कि गलती है। ठीक है? अगर आप प्रोफ़ाइल अपनी सेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप रिसर्च करो। ठीक है? आप रिसर्च करो और रिसर्च करने के बाद हर चीज़ आपका प्रोफाइल ओवरव्यू हो गया। ये देखो कि आपके अगेंस्ट जो कंपैरेटर्स हैं आपके, उन्होंने अपनी कैसी प्रोफाइल सेट करी हुई है। एक और अच्छा तरीका है प्रोफाइल ओवरव्यू सेट करने का, वो ये है कि आप अपने 10 कंपैरेटर्स निकालो। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गेम डेवलपर हूँ, ठीक है? और मैं अपनी प्रोफाइल बना रहा हूँ। मैं अपने ऊपर रख के जो है ना सोचने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ और मैं अपवर्क के ऊपर हूँ, स्पेशली मैं यहाँ पे अपवर्क की बात कर रहा हूँ।
ओके, तो अभी जब हम लोग इसकी बात करते हैं प्रोफाइल सबमिशन की या रिजेक्शन की, तो एक वे क्या है, वो ये है कि हम लोग दूसरे लोगों को देखते हैं, ठीक है। दूसरे लोगों को देखने के बाद हम लोग जो है अपना एक पैटर्न बनाते हैं जिसके ऊपर हम लोग चीज़ जो है लिखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने 10 लोगों को सेलेक्ट करा, अपने 10 कंपैटिटर्स सेलेक्ट करे, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके अंदर से पॉइंट्स निकालोगे कि 10 बंदों ने अपना पैटर्न क्या लिखा हुआ है, शुरू की 3 लाइनों में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट की 3 लाइनों में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद की 3 लाइनों में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या काम करोगे, आप जो है अपना प्रोफाइल ओवरव्यू लिखोगे, उसके बाद जो है ना आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हम लोगों के पास प्रोफाइल सबमिशन का फेज। इसके अंदर आपने सेट करा, स्केल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज once you complete your profile, the next thing we have is like right after getting your profile approved, the next thing you will get is you will get the number of connects, okay. So there's a thing called connects, and connects is just like a token. So let me just ask you, how many of you have actually went to some theme park like Sinbad or Aladdin? Okay, and how many of you have played some arcade games? Okay, so it's almost everyone. So the thing is, you have a token, okay? You have a token where you have to put that token in the game and the game starts playing, okay? Just like you are on a game and then you just insert the token and that token allows the game to be played. And with that way, you just play a game, right? So in Upwork, what we have is a connect. Okay, so in connects, what you usually get is an option that you can apply on different jobs. So there are 3 types of jobs, and what Upwork has done is it's actually has distributed or categorized its job into number of connects. So you will have like some jobs that will require 2 connects, and then 4 connects, and then 6 connects. Okay, so once your profile get approved, the next thing you will get is number of free connects. You'll get around 20 connects or even 80 connects, all right? So once your profile is approved, the next thing you will see is number of jobs in your news feed, okay? Just like you see on your Facebook news feed, you will see some jobs posted by some clients in the news feeds, all right? The next thing you will have to do is just apply a filter, all right? Now, okay, so you'll have to apply a filter, like filter jobs, and just make sure that you don't apply on all the jobs because you'll see around, if you see around 50 jobs in your news feed, you don't really have to apply on everything or every job because once your connects are done, like your connects are wasted, you cannot apply on jobs unless you buy something, okay? You just have to buy some connects in order to apply on jobs. Now, uh, there are some filters that you have to keep in mind. The very first filter is the client's previous history. Client's previous history, okay? So you have to check whether the client has worked on with how many freelancers and what is his like previous reviews. Is he like, does he have a habit of giving fake reviews or like bad reviews? So if you see a client where you'll see a lot of negative reviews, just ignore that job, okay? That's the first filter. The next filter is like payment method verified. Okay, so you'll see a badge, payment method verified. You will see a badge on every job where you will see either a payment method verified badge or a non-payment method verified. So it means that the client cannot hire you. Let me just show you, okay? So payment method verified. Upwork. Okay, so if I just go to this, let me just check for a job. Yeah, okay, here it is. So here you will see that on every job, there is some sort of a badge, okay? Here you will see that the payment method has been verified. And what it means is that this client has already hired someone and has already completed a job and has already paid someone,
Okay, so if you see a badge that is like not in blue color and you see like payment method not verified, it means that the client cannot hire you. Okay, the client can literally not hire you, and if you apply on that job, there's a high chance that your connects are going to get wasted. Okay, so since you have a limited number of connects in the beginning, you don't really need to apply on every job. So that was the second filter. Okay, so payment method verified, and the next filter is okay. The next filter is how many applicants are already there. Okay, so for example, you just saw a job post where there you'll see the number of proposals. It is like less than 5. Okay, so just 1 hour ago, this job was posted around 1 hour ago, and you see the number of proposals is like less than 5. Okay, so you can apply on these jobs, but if you see number of proposals like more than 50, don't apply on it. Okay, because the reason is if there are already 50 plus applicants, you really not going to have a chance. Okay, you're not going to have a chance. So just be careful with your connects and they won't get wasted. Now, okay, so once you filter your jobs, the next thing you have to do is to prepare your resume. Okay, in local market, when I gave you an example of like then you set up your resume, but in freelancing platforms, what you do is you set up your cover letter, okay, or proposal. So the next thing you'll have to do is set up your proposal. Okay, so proposal is just like your resume, and your resume contains, let me just write that down. Proposal includes cover letter, okay, it includes your pricing, and it includes timeline. Okay, so in your resume only has your experience and nothing else. Okay, your past experience, your project details, or anything that you've worked on. Your cover letter or your resume will have that. So like around 30 minutes ago, I told you that there is a difference between CV and proposal. That was the main thing, because your resume won't have your like pricing and timeline. Okay, that's not pipeline, it's timeline. Okay, so you will have your cover letter, pricing, and timeline in your proposal. All right, so the next question is how to write a cover letter. Okay, that's the main thing, because you have to set up your cover letter, and there are some points that you have to keep in mind while typing your cover letter. The very first thing you have to do is write questions. Okay, and I'll tell you why I'm saying this. Okay, the next thing is your portfolio items, and the next thing is your short intro. Okay, so now just to give you an example, let's head over to Freelancer, and I'll show you something. Oh man. Okay, let's just check on browse jobs. Okay, so this is the platform, and let me just search for graphic design. Oh no, okay, no graphic design. Let's just search for mobile, or let's just search for WordPress. Okay, it's a skill. Okay, so 6 days left. When I click on this job, you'll see something. Okay, okay, so this is job post. This is a job post, and here you can see all the proposals. Okay, so view more, and you'll see a similar pattern where people would just copy paste their cover letters. Okay, and this is the reason why when a client posts a job, he already know that there will be a lot of generic responses. Okay, so you don't have to like just like paste something, or just don't go with a generic cover letter. Okay, that's the reason why I'll always recommend to write a custom cover letter, because on generic cover letters, it's not a good thing if you are just copy pasting your cover letters or like just a template on every job. Okay, by the way, just give me 1 second, let me just plug in my charger.
Okay, so all right. So here you will see a lot of generic responses, and they won't even make any sense. Okay, so let's just see. The client, I need a web designer, WordPress, and here you will see a lot of generic responses. Okay, I've gone through your job post, understand everyone will be bragging about himself or herself in their cover letter. Okay, but you don't have to do this. Okay, so when you are preparing your cover letter, thing you have to mention is like questions, because with questions you will be able to get the client's attention. Okay, the next thing will be the portfolio items, and you cannot paste like 50 portfolio items in your cover letter. Okay, don't do that. All right, now when you see a job post and it matches your skill, the first thing you will have to do is write questions, and those questions should be technical. Okay, they should not be generic questions, right? The next thing is setting up your portfolio items. If you have 50 portfolio items, you don't really need to mention all your 50 portfolio items in your cover letter. Don't do that, okay? And the next thing is your short intro. You will see that people have actually pasted their whole intro in their cover letter and nothing else, okay? So here you will see, I am this, okay, this is not a cover letter, okay? Okay, on every cover letter, you will see that the people or the freelancer would be bragging about himself or herself. So you don't really have to do that. You can just be like precise and just ask questions, relevant portfolio items, just attach relevant portfolio items, and just short intro. Your intro should not go more than 2 lines, okay? Don't take like the whole paragraph or 2 paragraphs for yourself, because the client is literally not interested in your own introduction. He is actually interested in listening to all the technical things or all the relevant things that you have to say. Okay, so if I ask any question and I show relevant portfolio items and just short intro of myself, like I just have 5 years of experience in game development, I'm sure that the client would be interested. Okay, and that has happened. I have got jobs with just questions and portfolio items. Okay, so the next thing is the pricing. You will find something like strange related to the pricing, especially on Fiverr and even on Freelancer. You will see that if you have some price in your mind, for example, if I make a game and I have like $100 in my mind, you will see there would there will be someone with a mini budget, okay, with just a mini quote. So in 30 US dollars, I'm not really sure, but she'll gonna do like this task in like $30 in just one day. So you don't have to go so low, all right? You don't have to decrease your price, but there will be one thing I will recommend. If you have like $100 in mind, just go with 60 or 70, okay? Don't go with 20 or 30, just go with 60 and 70. The next thing is a timeline. Timeline is a factor that will be discussed further during the interview process and during the conversation with the clients. So if you want to like go in the top of your cover letter, for example, there's a thing, Freelancer has a mechanics where it ranks all the cover letters. So what you will have to do, you just to get on the top in the listing, you can just set the timeline to minimum. Just don't put what I can say, just don't put a timeline that is not like understandable. So for example, if a client has an expectation of having a job done in a month, just don't write that you will do the job in 7 days. Okay, don't do that. So just put the timeline as low as possible, but just don't go with unexpected timeline. Okay, don't do that, and you'll get a response. Okay, so proposal is done. The next phase is the interview process. Okay, just like we do in the local market, like the newspaper mechanics, the next phase in the interview process. So for example, you applied on a job, you wasted, or no, not wasted, you applied on a job using 2Connects and you applied a filter. You found a job that matches your skill, and you wrote a proposal and you wrote a cover letter, set pricing, timeline, everything. And luckily, the client got interested in your profile. Okay, so he went to your profile and saw that you have written things like properly.
you have mentioned your portfolio items, skills, and all relevant stuff, and he decided that he would go with you. Okay, so he would go for the job. Okay, so the next thing he will do is he will just invite you to interview. Okay, so he'll just send you a message and start the discussion related to the job. So when that discussion start, the biggest like mistake the beginners do is that they jump to a phase where they just ask, when are we going to start? Don't do that. Okay, if you get a response from the client, make sure never to talk about just starting the project right away. Okay, don't even say that. Let the client say this. And the way how you can do that is by asking relevant questions. Okay, ask so many questions, just make the client confused, just confuse the client, and he will automatically say, man, just shut up and let's start the work. Okay, that has happened. Okay, so you have to do what? You have to ask relevant questions, as many as you can. Okay, so ask as many relevant questions as you can. Okay, so the interview phase is done. The next thing is we had, so confusing the client is actually a good thing. Yes, in some cases, yes, it is a good thing, because if a client is non-technical, he won't really understand what you are trying to say, and he will just have had an impression that you can do the job, and he will eventually say, just start the work. Okay, but if you are talking with a client who is like technical in his field, that's actually a good thing. Okay, that's actually a good thing. And the reason why, because I was able to get a good project with the way that I'm telling. Okay, what I did is I had a client was actually technical, and I asked a lot of technical questions. He had an impression that I can do the job. Okay, he actually talked with other freelancers as well, and everyone said that let's start the work, let's start the work. But I was the only one who was actually asking technical questions, and we had that conversation for over 2 weeks, and the project worth was like more than 8K. Okay, so for more than 2 weeks, we just had discussion about how I can help with the product and how I can like do this thing, and there were some suggestions that I was giving, and there you go. I was able to get the client. He had a budget of around 5K, but I was able to convince him that this task cannot be done in less than 8K. Okay, 8K USD. Now, okay, so interview. The next thing is the timing and like job discussion related to timeline. There are two types of projects you will see. One is the hourly. Okay, so whether it will be an hourly job or a fixed price job. Okay, so even if you see on a job post, let me just check. Okay, so here you will see that this job is like an hourly job, and this job is a fixed price job. One more thing related to the filters: don't apply on the hourly job, at least in the beginning. Okay, just apply on a fixed price, small jobs. Okay, don't go for like more than uh, $50 jobs. Just apply on the smallest job that you can see. Just go for below 50. Okay, because because the connect distribution is something like this. On every job, okay, on a job that is like less than $50, it will consume around 2 connects. And um, if a job is like greater than 50 USD and less than 500, it will consume around 4 connects. And if you see a job that is greater than 500, okay, it will take around 6 connects. Okay, so when you are like starting as a beginner and you get free connects from Upwork, make sure that you apply on all the jobs that are below 50. So just add a filter in your job feed and apply on small jobs. Okay, don't apply on big jobs, because eventually you'll have to buy connects, and that won't be good. Okay, so the next thing we have is like job types. Okay, there are two types of jobs. That one is an hourly job and the other one is a fixed price job. In hourly job, you will get a tracker. For example, an hourly job got started, and the next thing you will have to do is download a tracker.
okay? And tracker will get started and it will record all the keystrokes, mouse clicks, and screenshot. So it will be like, it will take a screenshot every 10 minutes, like in random time, and that will be uploaded on Upwork. So that will be uploaded on Upwork, okay? So, all right. So at the weekend, what Upwork will do, it will send a bill to the client and the client will pay from his credit card. So hourly jobs work like that. You just set an hourly rate and that rate will be sent to the client. And after that, he agrees on a certain hourly rate. What he will do, he will just start the job and you will have to start a tracker that will record all the keystrokes, mouse clicks, and screenshot, and he will send it to the client confirming that you have worked on a specific job. After the weekend, like on Monday, you will get paid, okay, automatically. The next type of job is a fixed price job, and it's just like a contract that we usually deal with local workers. So for example, if I have a plumber, I have to get a job done. What I'll do is I'll ask his rates, okay, from him. I'll ask his rates, and once I agree on a certain rate, I'll give a contract, and when he does the task, I'll pay. Okay. So fixed price jobs work like local vendors. Okay, so hourly job and then a fixed price job. So once you complete a task, okay, there's one more thing in the fixed price job. Usually you will see there are small jobs and there are big jobs. So on small jobs, you will see some sort of like milestone. Okay, there is a mechanics that is called milestone. And what milestone is that the project is distributed in several milestones, like a small chunk of a project. So if I have $1,000 project, I can distribute, or even I can discuss this with the client that I would like to have one milestone that will be paid at the end of the project, or I would like to go with small chunks of the project so that if I agree on like $250 of 4 milestones, okay, 4 milestones worth of $250 each. So what I can do is I can just distribute my whole description about the project and just set a specific set of specific set of tasks that I will do on the milestone number 1, and then I'll get paid. Okay, so milestones is just like that you just divide the whole project in small chunks. Okay, so fixed price projects and then hourly projects. So for example, you just got a job done and the next thing you have is like get paid. Okay, yeah, so get paid. Yeah, everyone wants to get paid. So there are certain payment methods that you have on freelancing platforms. Okay, Upwork and other platforms as well. So Fiverr. Okay, so it's not Upwork, it's Upwork and Fiverr. The first payment method we have is Payoneer. Okay, you will see that Payoneer. We'll get onto it. Payoneer, and then we have direct bank transfer. And then we have PayPal that is not available in Pakistan. Okay, so direct, and there is one more, and that is Moneybooker. Okay, Moneybooker, also known as Skrill. So the preferred way that I personally prefer is Payoneer. Okay, and Payoneer is just like an external wallet or an external website. Okay, an external website that will keep your money saved just like a bank account, an online account that you can just withdraw from Upwork to Payoneer, and then from Payoneer you can just withdraw the money from Payoneer to your local bank account. So the mechanics work like this. You get paid on Upwork on a job. For example, it was an hourly job. After like a week, you will get your funds ready so that you can withdraw. And in hourly job, you get your funds, or let's just say you have some funds on Upwork. From Upwork, it goes to Payoneer, and then it goes to your bank account. Okay, there are 2 accounts that you can connect on Payoneer. Okay,
There are two bank accounts that you can connect on your Payoneer account, and the way you sign up is by either using Jazz Cash, okay, or by just signing up on like through web. So two ways. The way you sign up on your Payoneer account is just by going on Payoneer sign up and then putting your bank details, and they will approve your account. And after that, you will attach your Payoneer account to your Upwork account, okay? And same thing goes with Fiverr. Even Fiverr supports Payoneer. So it's actually the most popular platform on Fiverr. You just get paid through Payoneer, okay? So bank details, and once your account is approved, then you can attach it on Fiverr and then Upwork. Okay, so this was like Payoneer. The next payment method is direct bank transfer. Direct bank transfer. And in direct bank transfer, what happens is you have some funds on Upwork, okay, even on Freelancer. And from there, you will get your money directly in your bank account. Okay. One thing, in the very start, like in the start of the session, what I mentioned while creating a profile, like when we were completing our profile, I mentioned that your NIC name and your name on Upwork has to be the same, okay? And the reason why I said that at that time is that if you have any conflict in your name, you will have problems with direct bank transfer, okay? The bank transfer, or like your account, your bank account will not be connected, because usually what happens is your NIC name and your bank account title is the same, okay? So everyone who has a bank account, his title of the bank account and his Upwork account's name, or like his NIC name, will be the same. So same thing goes with Upwork. So if you are signing up on Upwork, make sure that your name is the same as your NIC. Otherwise, you will have issues. This account will not be connected, okay? Your bank account will not be connected to your Upwork account, and it will be on hold, okay? So that's a reason, that's actually one reason why I recommend Payoneer, because Payoneer, you can just attach any account, all right? So there's Payoneer and there is direct bank transfer. The next option we have is PayPal. Okay, so PayPal works similar to Payoneer, but PayPal is not available in Pakistan. Okay, but Fiverr has an option to just attach a PayPal account. So what are the payment methods on freelancer.com? Well, you have direct bank transfer. Okay, so you can just, it's actually called express withdrawal. So you can just attach your bank account on freelancer.com and you'll get paid. Okay, so PayPal works similar to Payoneer. You attach your PayPal account. That percent will be deducted from Payoneer in terms of like conversion rate. And you usually get a low conversion rate. Like for example, is the video paused? Pause. Okay, that's interesting. Okay, are you guys able to see me? It's working now. Okay. Thank you for telling me. Now, direct bank transfer and then Payoneer. So we were at Payoneer. Let's say that you have a dollar rate of 161, okay, or 162. The conversion rate that you will get from Payoneer will be around 156 or 157. Just decrease like 0.2% and you'll get the exact idea. So if I am actually withdrawing $100, the conversion rate I'll get will be something like 98 or like 2%. Okay, so 2% will be deducted from the conversion rate. Now, in direct bank withdrawal, you'll get a low conversion rate too. So if the dollar is like 162,
If the dollar is 162, you will get a conversion rate of around 155 or 154. Okay, 155 or 154 depending on your bank. There's another payment method that is known as money booker. Okay, known as money booker, and that is money booker, that is Skrill. Okay, and in Skrill what you have is actually same as Payoneer. So just like you withdraw some money from your from Upwork to your Payoneer, the same thing will goes with money booker. So money booker is just like a website that is similar to Payoneer. You withdraw funds from your Upwork account to your Payoneer account. You withdraw money from your Upwork to your money booker account. But there's a thing, with money booker. I don't recommend money booker, and there is a reason why. Because my personally my own account was hacked by someone from Nigeria, and after that incident what happened is I don't really keep my money in any of the accounts. So even if I have Payoneer, but I don't really keep my funds on my Payoneer account. Okay, so what happened was someone from Nigeria was able to hack into my account. I'm not really sure why, but he was actually able to withdraw some amount. Okay, I don't usually keep money on my these online wallets. So what happened was he was able to withdraw around $1, but the problem was not the money. Okay, it was not the money. It was just $1. The problem was the security. So I don't really recommend using money booker. Okay, that's just my personal opinion. That's an advice to you. So don't use it. Okay, that's my personal opinion. It's just a recommendation that you guys can follow or not follow. So there is one more issue with money booker, and that is support with the bank account. Usually what happens is when you attach your Payoneer account to your bank account, or vice versa, just add your bank account to your Payoneer account. What happens is sometimes these online payment methods, they use an intermediary bank. So if you have an unpopular bank here, what would happen is that bank will use an intermediary service, and you will be charged extra in terms of conversion rate and in terms of transaction fee. So with Payoneer, I personally have an account in Habib Metro. Okay, so Habib Metro doesn't use an intermediary bank. Okay, so my funds comes from like Payoneer, and then get it that they get deposited directly in my Habib Metro account. But what happens with Money Booker, when I tried to withdraw like around 4 years ago, what happened was $90 was actually deducted. Okay, and for me it was a big amount at that time. $90 was actually a big amount. Well, it's not really in like 4 years ago, it was around 7 years ago. Okay, when I started, so I had Money Booker. I tried to withdraw some money and $90 was actually deducted, and I went to the bank. I just asked what happened, and they explained that Habib Metro and Money Booker doesn't have really good support. So what we usually do is we usually have an intermediary bank that was Habib Metropolitan in Switzerland, and your money went from Money Booker to that intermediary bank, and then it came to our bank. And during that process, some transaction amount was deducted, and you were actually charged a fee. They actually showed me a whole receipt of where my money went and what was the medium and where it came from. Okay, so I personally don't recommend Money Booker. That's something. Okay, so Money Booker, that's a thing. The next thing we have is like Fiverr workflow. Now Fiverr works exactly like a shop. Okay, the first step is you sign up. Okay, so sign up as a seller or a buyer. There is also one option that if you even are a seller, you can like buy others gigs. Okay, buy anyone else's gigs. So you just sign up as a seller. The next step you will do is set up your shop. It means on Fiverr you'll have to create some gigs. Create gigs. Okay, now when we are creating a gig, there are several things that we have to make sure to keep in mind, and that is the first thing is a title. You'll have to set a title. I'll get to it why I'm saying this. The next thing is the tags. Okay, the third thing is the description. The fourth thing is image.
Okay, and by image, what I mean is by gig thumbnail or like just portfolio items that are present in the gig. Okay, so the first thing is the title. When you are searching or like trying to create a gig, let me just show you one thing. Okay, so if I go to, if I switch to buying mode, okay, if I just switch to buying mode, what I'm going to do if I'm like signing up as a seller, what I'm going to do is I'm going to search my relevant niche. For example, I'm a game developer. Okay, so what I'm going to do is I'm going to search a game developer or a game development or Unity 3D. And the next thing I'm going to do is I'm going to copy the titles from all the top gigs. Okay, that's one way, because if you are going to set up on your own, you will have some issues. Okay, so the thing we usually do is copy all the content that is available on the first page, and you don't really copy and paste it on your own gig. What you have to do is copy the title. Okay, copy the title and check for relevant keywords, because you will notice one thing. I will develop Android and iOS games on Unity. Okay, develop games. These are actually keyword. Develop Unity games. Okay, so you have to extract these keywords and then make a new stuff or make a new title that will be your own. Okay, so select the relevant keyword that are already on the top and then just set a title for yourself. Okay, same thing goes with the tags. You will see one thing. Let me just go to like 1, 2, this is okay, 3 and 4. Okay, so I just opened 4 gigs that are actually my competitors. So if I'm making a new gig, what I'm going to do, yeah, there's one thing. These are like 4 orders in queue. It means that he's actually working on 4 projects at the moment, only on this gig. I'm not really sure about the other gigs, but he's actually working on 4 projects. All right, so the next thing you'll have to do is set a tag, and you will get tags from the bottom. Okay, so related tags, here are the tags that the guy has put in, and what you can do is you can copy the tags from the top 10 or like top 15 of your competitors. Okay, just copy the tags and paste it in a text file and extract all the common tags and put those tags in your gig. Okay, the next thing is a description, and just do the same thing for your description as well. And the reason why I'm saying this, if you're like inexperienced and don't have any experience on Fiverr and just setting up a gig, you will have a hard time in setting proper description, proper title, and proper tags. And Fiverr actually ranks your gig based on the content that you have provided. So for example, if you are a game developer or like a graphic designer, or well, if you're from any field, Fiverr doesn't know you. Okay, Fiverr doesn't know that you are a graphic designer. He doesn't know that you are a game developer or a content writer. He can only judge your gig based on the stuff that you put in. So I have to put relevant title that will include the word content writing. I have to put relevant tags that will include the word content writing, and I have to put relevant description. Okay, relevant description means have keywords in the description. So I will have to add description based on those keywords. So these 3 things, they are highly relied on keywords based on your skills. Okay, now the next thing we have is image, and you will notice one pattern. Okay, these are some gameplay images. Okay, these are some gameplay images, and let's just not focus on this one, because this one was actually done for a previous client. What we can do is we can check for screenshots for just for reference. Okay, we're not going to copy that. Don't copy, don't download. You can download a gig like image if you can actually purchase a license. So if I go to Pixabay, it's a website for vector illustrations and like some cool graphics. You can only use an image that you own. Okay, so if you don't have a license, don't use it in your gig, because if someone reports your gig will get removed. Okay, so you have to create a gig. The next step will be to just get ranked, and
ranked will be based on title, tags, description, and image. So if you put a title that doesn't represent you, it won't gonna get ranked, okay? Because if I am a content writer or if I am a game developer and I don't put relevant keywords in my title, Fiverr will not know that my gig is about game development or like content writing or even about myself. So okay, so once you put all those things properly, Fiverr will rank your gig and you will get three things. Okay, you will see a lot of these issues. So impressions, and by the way, how many of you are some active members of any freelancing group? Impressions, views, and okay, impressions, views, and clicks. How many of you are actually active on Facebook? No one? No? I'm active on Insta. Okay. Okay, so everyone is like, oh, I don't use it anymore. Okay, so if you are like going for freelancing, you have to make sure that you use a social media platform. Okay, because social media platforms can also provide clients, right? So after the session, what you guys have to do is just what you can say, just apply on any group joining. Okay, just join some groups and some active groups. Okay, just some active freelancing groups, and you'll see a problem where people will be complaining about their gig impressions, their gig clicks, and their gig views. Okay, and what it means is impressions means if a gig is ranked, whether the client can see the gig or not. Okay, so it's just like this. So if I type like game development, these 4 gigs just got one more impression. Okay, and now these gigs, okay. Now impressions means that how many times a gig was searched and got onto a specific page, whether it's page 1 or page 10, and how many times a client actually saw that particular gig. Now the next thing is the click. You'll see that impression, click. Click is this one. So I see a particular gig and I thought, man, okay, this looks good. Let me just click on it. Okay, and I just clicked on it and just went back. Okay, so what happened is I was able to give him one impression and I gave him a click, but I won't be giving him any view. Okay, and what it means is that if I open a particular gig as a client, okay, this is the gig, I just clicked on it and I just read some description. Okay, so about this gig, he's an expert, please contact me before ordering this gig, and yeah, okay, so now I was able to give him a view. All right, so if you're getting an impression, if you're getting enough impressions, it means that your title, tag, and description is okay. Okay, if you get good impressions equals to title, tag, description is okay. All right, now if you're getting good impressions but not getting clicks, it means that your image, all right, your thumbnail is not good enough. Okay, low clicks means low clicks equals to bad thumbnail. So if you have a bad thumbnail, it means that the client is not going to view. All right, now the third thing is this view count. Let's just write it as view count. So view count means that how many times the client was able to read properly, or he spent some time in reading the description of your gig. And if you get a good impressions, that's a good thing. Okay, it means that your title, tag, and description, they are fine. If you see like good impressions but not number of clicks, it means that your thumbnail needs improvement. The third thing is the view count. So if you don't see a view count, it means that the client didn't really took any interest in your description because you didn't really put enough description or proper description. So it means that bad description.
All right. So if you have all of these, like, as good, you have a good impression rate and good click-through rate and good view count, it means that your gig is good. So if a client is spending some time in viewing or reading your description, gig description, it means that he will be interested in contacting you and ordering your gig. So you create a gig, and the next thing is you wait. All right. So you have to wait for a response, just like a local vendor. Now, you will see one more thing. Okay. You will see one more thing. If anyone has ever been to Mandi, anyone? Like Guy Mandi. Okay. So what you usually see in Guy Mandi is people usually have a small space where they put their kettle, and they have some people who would just pick their cattle and they walk with the cattle and they will try to talk with any customer on the road. Okay, that usually happens in like Guy Mandi. So just like that mechanics, Fiverr has a mechanics where the client posts a job, okay, job request, and all the freelancers or all the sellers, what they have, like they have an option to respond to that custom offer, like job request, and apply with their rates. Okay, so it's similar to the newspaper mechanics where you will see a job post and you can apply or send your gig, just send a gig and tell the client that I can do your job, this is my gig, and have done this work before, this is my similar work, and I have this much portfolio items, all these stuff. Fiverr has that mechanics as well. So that is called buyer's request. So buyer request is something like when a client posts a particular requirement and he tells all the freelancers that I need a certain thing to be done, and these are the description and these are the details. Okay, so me as a seller, I have an option to just send my gig on that particular buyer's request, and I will be able to get clients attention based on my gig, based on my cover letter, and based on the questions that I write in the description. Okay, so buyer request is a similar mechanics, just like Upwork. Okay, so buyer request is a small feature. Now, there are certain things, like once you get your profile, or like once you get an order from a client, the next phase will be the delivery phase. Okay, so you'll have to deliver an order, um, order phase. So in the order phase, what you will see is you will get a timer, and the timer will start, and that timer is actually a timeline based on like what you have set up in your gig, and the timer will start. And once the timer starts, you will have to make sure that you do the task that you have described in your gig, and then you just have to deliver the order, and the client can accept or reject based on what you have done. So if he accepts, okay, timer, do the task, and do the task, complete the order. So for example, the client was happy with your progress and he accepted. So there will be two cases: your work gets accepted and your gets rejected. Okay, so in the form of accepted, you will get paid, and after 14 days you'll get paid in the account, but those funds will not be available to you like for the next 14 days. And after 14 days, they will be available for withdrawal. Okay, so now this happens when your order was okay and the client was happy with the progress and he accepted your order. When you delivered the order, he accepted the delivery and your order will be marked as complete. Okay, the next thing is if your order got rejected. So in case you have like the client rejects your order, he can either go for a dispute, okay, or cancel. In both ways, the order is already canceled. Okay, if he is not like interested, he can dispute, cancel, or he can apply for revisions. Okay,
because you will mention this in your gig whether you're going to provide revisions or not. So if you are like okay with providing revisions, you will like just provide revisions, and he will be able to see your work, and then he can mark it as complete, or he just asks for a refund. Now, when he asks for a refund, now this is a conflicting topic. When he asks for a refund, you will have an option to either accept his dispute and just cancel the order, or just say no and let Fiverr do the work. So in case you get a dispute, Fiverr is going to ask you whether to return the money by just selecting yes. And if you select no, it means that you want Fiverr to judge that whether the client was wrong or you were wrong. Okay, so only select no if you're 110% sure that it's not your fault. Okay, because usually you will get some clients where they will try to get some extra work, or not even some, a lot of extra work without paying. So if a client is asking for a lot of extra work, you can just refuse. And if he like set up a dispute, you can just select no and let Fiverr customer support do all the things. Because once your order starts, you will have a separate chat box with the client where all the conversation between you and the client will be recorded, and that conversation will be reviewed when the dispute starts. Okay, so never start a dispute if you have a new profile. That's one thing. This dispute phase is for like for those who have some years of experience, and I'm sure that you will get some years of experience as well, but don't start a dispute. Just cancel the order. Okay, just cancel the order if a client starts a dispute, because that will hurt your profile. Okay, so now the next thing we have is there are some terms and conditions. Okay, because if you are working on a specific platform, there are some terms and conditions that you have to follow, otherwise your profile will get suspended. That's for sure. Okay, so let's talk about each platform. So Upwork, let's talk about Upwork. On Upwork, there are certain rules, and there are some like terms and conditions that is common for Upwork and Fiverr, like both in terms of payment. But let's focus on every term and condition. The very first thing beginners do is ask for a review. Okay, and don't ask for a review. And what I mean by that, don't ask for a review, don't ask for a specific review. So what I usually do is whenever I complete a job or whenever I deliver an order, I usually say, it would be great if you could just provide me a review based on my services, or just provide an honest review. Okay, I'm asking for a review, but I'm not telling the client that this is the kind of review that I want. Okay, so you don't have to do this. If you want a review, you just have to make sure, just ask for a review, but don't mention that you want a 5-star review, or you want a good review, or you want an excellent review or something. Okay, don't ask for a specific review. Okay, so the next thing, or the next terms and condition, the next point of the terms and condition is actually don't spam. Okay, don't spam. That's the thing. Because when we usually start working on freelancing platforms, and if we get a response from the client and all of a sudden the client stops responding, what we usually do is we usually spam. Okay, we usually spam. Don't do that. Okay, you can just send a reminder that well, I had that experience in like 2 days ago, where I was having a discussion with a client, and then all of a sudden he's disappeared for a whole day. So what I did is I actually sent a reminder, and I said, just following up on our previous conversation, do we have an update on this conversation or this project? Okay, you can send a reminder, but don't spam. Don't just put like question mark, 6, 7 question mark, just 6, 7 question marks. Don't do that. Okay, we cannot ask for just those ask. Okay, you cannot ask for a specific review. You can tell a client to just provide an honest review, but don't ask for a specific review. Let me just write that down, just to be more clear. Okay, you don't have to ask for a specific review. Just don't say that I need a 5-star review.
that I need an excellent review or I need a good review from you, just write this as my review. Don't. Okay, your profile will get suspended. So because it's against terms and condition. So the next thing is don't spam. If you are not getting response from the client, all right, you don't have to really send question marks, and 6, 7 question marks, because that happened with me. I actually posted a buyer request on Fiverr, and there were some freelancers. I had some work related to graphic designing, and what I did is I actually put a custom offer request on Fiverr as a buyer, and I got responses like 20 responses, and most of them are like Indian and Pakistanis because of the time zone that I was actually online at. So when I got responses and I had some conversation with people, and I noticed that they usually spam a lot. Okay, so because after like 2 to 3 messages, I knew that this guy cannot do my work, so I stopped responding. That's common thing. So if I see a guy who cannot do my job, I won't be wasting my time on him. So I just stopped responding, and what I got in the response was like question mark, question mark, question mark. Okay, so when you spam and it's on the client or like on the client, he can actually report you. He can just he can just report you that this guy is actually irritating me, is like harassing me. Okay, so on that point, your account is in danger. Okay, so don't spam. The third thing is never talk about payment method that okay, never talk about payment method. And what it means, Upwork already has a payment method. So if you get a client that tells you that, okay, Upwork has a specific payment method, but Upwork is charging a lot from me for just posting a job and just hiring someone, can we deal outside Upwork? At that point, even if you say, like, if you don't say yes, but have a conversation with him or like continue his discussion that we will see later on, your profile will get suspended. Okay, because Upwork takes this thing very seriously. Even Fiverr has the same thing about don't ask for a review and don't spam. Fiverr also has the same mechanics. Client can report your profile. Let me just write this down. Upwork and Fiverr do the same. Okay, so you cannot ask for a specific review, you cannot spam, and third thing, you cannot talk about payment method outside of the platform. So if you are working on Fiverr or working on Upwork, you cannot talk about external payment methods. Okay, you cannot. Okay, don't do that. You cannot talk about payment methods that are outside. For example, PayPal. For example, the client says that, man, Upwork or Fiverr is charging me a lot. Can we like do the payment outside of the platform, like outside Fiverr or outside Upwork? Okay, just refuse, and even mention this. It is against terms and conditions, and I'm not allowed to do that. Just to be on the safe side, mention this. Okay, so don't talk about external payment methods. Okay, so these things are really common on Fiverr as well. But when it comes to freelancer, basically keeping it professional. Well, yeah, that's the point, but not everyone understands it. So don't ask for a specific review, don't spam, don't talk about external payment methods. This point can get your account suspended on Upwork. On Fiverr, you will either get your account suspended or you will get a strike. Okay, so it's called a warning. Fiverr usually provide 3 warnings, and the third warning is actually your account getting suspended. Okay, so on third warning, your account will be suspended. Okay, no other option. On Upwork, if your account is suspended, you cannot create another one. Okay, because what usually happens is when you sign up on Upwork and complete your profile, and let's say your profile get approved, after your first job, your profile will be on hold. Okay, and what Upwork will require is they will require a video interview, and in that video interview they will verify all the documents that you will provide. You will provide your NIC details, probably your passport, and they will take a video interview for not more than 2 minutes.
and they will just confirm whether the guy that we have in the NIC is the same as the one who's talking. So you will have to provide your NIC details, and they will require a video verification. And once that is done, your profile will have all the records about, like Upwork will have all the records about you. So if your account is suspended on Upwork, you cannot sign up again. Okay, can you freelance if you're under 18? Okay, let's just talk about it in 2 minutes. Okay, so Fiverr, you will get 3 warnings, and then your account will get suspended. There is a way that you can have multiple Fiverr accounts and you can create another one. The first thing you will have to do is just some precautionary measures. Change your PC, change your laptop, change your network, and then create another profile. Okay, so that's the thing. On Upwork, you cannot. On Fiverr, yes, you can. There are some things that are really prohibited on Fiverr, and first thing is no multiple Fiverr accounts on the same network. So if I and my brother is working on Fiverr as graphic designer, one of us will have to change either the network or either the system. Okay, because Fiverr will consider it as multiple accounts and it will suspend both of the accounts. Okay, so that's a thing. And yeah, can you freelance if you are under 18? Well, yes, you can. And you can start with Fiverr. Okay, and the way you will do that is you can just sign up. Okay, just sign up with your details. And when it comes to payment method, because on Upwork will require the NIC and all the technical details, but when it comes to Fiverr will only ask for a payment method, and you can attach a payment method that is Payoneer. Okay, now the question arises that I don't have an NIC. How can I sign up on Payoneer? Well, the thing is, you can sign up using your parents' accounts. Okay, and the way you do that is by using JazzCash. So just use the JazzCash app and register your JazzCash account on your father's detail or your parents or any other, like any other in your home, on his or her details, and then sign up on Payoneer using your JazzCash app. Okay, and then just attach that newly created Payoneer account to Fiverr. Okay, and with that way, you can just work on Fiverr and get paid through JazzCash. Okay, so now these are the things. There is one more thing. There is one small thing. Here I can see that there is a message that is called basically keeping it professional. Well, yes, that's a huge thing. And there is one more thing I would like to add is during the conversation, you'll experience or you would make some mistakes in the sentences. So if I'm telling a client or if I'm asking, can you send me something? Okay. Yeah, I usually say, send me the files. Okay. That's a small thing, but I thought I should mention this. Send me the files. Don't say it on the freelance market. Okay, be polite. So just say, can you please send me, or like, just be polite. That's the whole point. During the conversation with the client, you have to be polite and you have to be professional, because that's the only thing the client is going to judge you on, your first impression. Okay, because when he sends you a message, the very first thing he will note or he will judge you on will be based on the way you are trying to communicate. So if you are polite, then the phase will be converted into a technical discussion. Otherwise, if you are not really professional and if you're not polite, the client will simply ignore you. Okay, so any questions so far? So any questions? Okay, so no questions, not okay, no questions. There is one more thing. How we can set up a portfolio? Well, these are the things. First thing, tutorial. You can just follow a tutorial and just use the things that you actually learned from that tutorial and make a portfolio item. For example, if I'm a graphic designer or like I'm a student that is trying to learn graphic designing, what I will do is
well, obviously I will follow some tutorials because I don't really know that. Okay. So what I'm going to do is whatever I learned from that tutorial, I can just not show all the stuff that is inside that tutorial as my portfolio. What I'm going to do is I'm going to just um, I'm just going to implement the things using those skills that I learned from that tutorial, and then I'll add that to my portfolio item. Okay. The second one was requirement from the job post. So when you sign up on a platform like Fiverr or Freelancer, it will be hard for you to get a job if you just sign up without a portfolio, because the client will not be able to have enough confidence in giving you the project since you don't have a portfolio. Okay. He may even not reply you. Okay. And the reason is obvious. You don't have a portfolio to prove that you are skilled enough to do a particular job. So what you can do is you can just grab the requirements from the job post and implement that and add that particular item as your portfolio item. Okay. The third thing was the Facebook marketing. All right. So when it comes to Facebook marketing, the reason why I told you guys that just be active on social media is because you will see a lot of clients a lot of clients on social media where we'll be asking for some work. Okay. We'll be asking for someone who can do their work. And the way you can do that, just to create a portfolio, stay active on some freelancing platforms, Facebook platform or freelancing groups. And then you can just post that I'm a student and I'm trying to create my portfolio item, and I can do a small task, and I can design a poster. For example, I can design a poster, or I can create a very small app. I'm just building up my portfolio. And what I think is 90 out of 100 times you will get a response. Okay. There will be a lot of people who would give their particular requirement to you. You can just get the requirement, do their work, small work, and then add that item to your portfolio. Okay. On content, or do you write on general topics? Well, it's better if you go with specific niche. Okay. And the reason why I'm saying this, on Fiverr, you will have many people who are working on specific niche, not general. So if I am a content writer, okay, if I'm a content writer, I will be in a field where there will be a lot of competitors. Okay. There will be no specific, like, there will be no specific niche that the client can judge whether I can write on that topic or not. But if I am a tech blogger, okay, or if I am a writer who does like health based articles, the client will get an impression that I can do that. Okay. So when we do some work for our portfolio, do we have to do it for free? Not every time. Well, since you're making a portfolio, if you are approaching someone or if you are just posting on Facebook, yeah, just for the small task. But if you are following a tutorial, requirements from the job post, well, I guess yes, in the start you will have to do some things, or like just for yourself. It's not actually considered free, it's actually investment in yourself. Okay. But once you get some job on freelancing platforms like Fiverr, Upwork, every job that you do will be counted as a portfolio unless you have an NDA. Okay. Yeah, that's the thing. There will be some jobs, that will require NDA. Okay. And the thing is, NDA is actually a non-disclosure agreement, and what it does, it actually prevents, or not exactly, because we we usually ignore that, but NDA is an agreement that will, like, say to you that don't share the details. Okay. So if you sign an NDA with a client, you cannot add that item to your portfolio item. Okay. So any other questions? All right. So that was it from my side. And there's one more thing. Well, since this was a really short session, I tried to cover all the things um, just to get you guys started. And if you want to learn more, or just, I think people have some questions. Okay. Yeah. Well, you, you guys can ask if you guys have any questions. But um, VA courses, virtual assistant courses, well, that's the thing.
virtual assistants, well, that's an Amazon market. I'm really not experienced when it comes to Amazon. So I won't be able to make any comment on that. Okay. So that was it from my side. You can also do one thing if you want to like learn more. You can just head over to YouTube and just search for Aqeel. Okay. You'll get some content that will be helpful for you guys. Okay. So that was all from my side, and Allah Hafiz. Thanks so much for your valuable training, Farhan. We certainly learned a lot from your experience, and I'd also like to thank Cedar College management and students for their time and valuable contribution, and of course for giving us this platform to connect with each other. Um, Guys, we'll be happy to take questions and feedbacks from you all now, or even later. I'm attaching the link to the feedback forum here. Farhan, I think we have one question which just went unanswered, I think. Okay, what was the question? So Go back in the chat. I think Fatima asked a question. Okay. Oh no, Nahal Naeem. Okay. Okay, I can just see that I had a question, but I don't see a question. If I want to provide editing services, how do I make my portfolio? That's her question. Well, if I want to provide editing services, how? Well, the pattern will work the same as for other fields. Well, if I am a graphic designer, I'll do the same thing. Okay, so if I'm a graphic designer, I can either go for social media and I could just look on jobs. And let me just get on that specific point. Here it is. So when it comes to editing services, I can just follow a tutorial and use those skills and edit my own videos. Okay. I can search requirement from the job post and put those requirement on any random video, and I can go on Facebook and ask people if they have any work or small work that I can do for free just to make my portfolio. Okay, it's actually the same pattern. It's not really like limited to just one field. You can literally apply these tips on every niche. It can go with graphic designing, it can go with content writing, it can go with game developing even. It can go with like blog writing, accounts and finance. These three things are really applicable for all the fields. Okay? I hope that answered your question. Thank you so much, Farhan, again. Thank you for being a lovely audience, guys. We're going to end the session here. Allah Hafiz.